करेगा अच्छे से बात कर थोड़े अच्छे से बात कर High as a kite, never sober. Python, him with a cobra. Free up my bro, Casanova. Bad man persona. Bad man alone can control her. Sorry, your sis got bent over. Pushing my hood to anaconda. Fall back like Ed Hardy. Stay fly, I'm high like Jeff Hardy. झूले में चिंगारी सर पे अच्छा बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त सब समंदर पार से बोले वसा डीएम में लड़कियां लिखती है खत गली गैंग छाती ठोक के तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है शांति बनाना हम मंत्र बोलते तू रो देगा अगर अपन संतरा बोले पत्थर तोड़ के निकले इसरो की तरह छाप भी नहीं गई दूसरों की तरह वास्तव में कला मेरी लाइफस्टाइल की तरह रोली रेंज वो मैं चक्री की तरह नंगे पैरों जो सिग्नल पे खड़ा राज्य से स्वागत का मजा बादलों के ऊपर मेरा स्वैग अप्सरा स्पाइसी ये सब सिर्फ चॉकलेट कलर What's up guys, we are back with another stream. कैसे हो सब लोग? कैसे गए इतने दिन में लाइव में आया बताता आपको सारी चीजें जो भी नहीं आ रहा जल्दी से लाइक करो गाइस चैनल को थोड़ा नेट गया था फिर से आया अपन लाइव लेट्स गो गाइस यस यस लेट्स गो आज कम्युनिटी मीटिंग है मीटिंग में जाके बैठते फिर देखते बात करते 2 मिनट देना गाइस मुझे सेटिंग कर लो जरा सेटअप कर लो पूरा बहुत दिनों के बाद जरा if there is any chance in future that second channel slot go down and get free okay मीटिंग चालू नहीं हो गई देखते हैं जो भी नहीं आ रहा जल्दी से लाइक करो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो यार अभी वाचिंग बढ़ी थी बट कोई ना चलो करते हैं जैसे टैग डाले टैग भी गायब हो गया क्या बोलूं आता 2 मिनट चॅट सांभाळ ना 2 मिनट फक्त टॅग टाकतोय चॅट वाचता येणार नाही असल चॅट मध्ये देतो सगळं सेटअप केलं तर सगळं काय म्हणतात ते लावलं होतं ते पण गेलं राव हट सगळं आता परत पहिल्यापासून करायला लागलं एक काम करतो थोडी स्टॅक टाकतो आता सब काय करत बसतो झालं काही बस टॅग टाकू एक चल जाऊ दे लाइक करो गाइस जो भी देख रहे स्ट्रीम को जल्दी से लेट्स गो 5 लाइक हो गया यार लेट्स गो गाइस 3 बंदे देख रहे थे लेट्स गो टॉस हो रहा है गाइस टॉस मैच देख रहा मैं सामने लाइक करो गाइस 6 बंदे ने लाइक किया गाइस लेट्स गो यार कर दो लाइक जल्दी से लाइक करो गाइस चैनल को लेट्स गो होप मेरी आवाज आ रही होगी एंटर होते ही गाने चल रहे हैं मीटिंग एंटर हो गया बस लाइक करो गाइस चैनल को प्लीज लाइक कर रहा था इसको शेयर कर
गाइस लाइक करोगे लेट्स गो का स्क्रीन दिखाता हो 2 मिनट देना गाइस जरा मीटिंग चालू होने दो फिर दिखाता हूँ किस किस ने ट्रेलर देखा गाइस लाइक करो गाइस ट्रेलर को भी जाके लेट्स गो गाइस सब गोल भी ठीक हो गए लेट्स गो इसको देखते हैं आई थिंक लास्ट इज नहीं मिस्टर रॉयल तो जो भी नहीं आ रहा जल्दी से लाइक करो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो लेट्स गो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो चैनल को लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो 230 का गोल है आज का ओनली 8 सब्सक्राइबर करने हैं अपने को सिर्फ लेट्स गो कर दो फटाफट से कर दो लेट्स गो आई थिंक लास्ट इज नहीं मिस्टर रॉयल Um, 2 more minutes and we start, guys. स्क्रीन का देखता हूँ Is it तब तक can we open PTS so people can put questions जब तक we'll complete our part. ऑलरेडी पूछ रहे हैं लोग नो वरीज हाँ I know I know. Okay. Okay. PTS is open.
शैम्पू नीचे से सबको ट्रैक कर ले। स्नाइप कैडबरी, स्नैपी, कार्तिक, हाँ। फ्लैश। लाइट में शुरू कर देते हैं। Okay. Yeah, guess everyone's here. So welcome again, guys, for the second half of the first community meeting of Soulcity. मिस हो गया था उस दिन with the essence of time हम लोग queries नहीं ले पाए आप लोगों के and we wanted to really hear any questions that you guys have and answer them. कि वैसे we are trying to keep up. A lot of people have questions और वो लोग tickets खोल रहे हैं हम लोग constantly कोशिश कर रहे हैं कि हम priority पे answer करते रहें but there were few things that we definitely wanted to mention जो मैंने agenda में भी किया था so आई थिंक उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं वी आर ऑलरेडी रीडिंग क्वेश्चंस तो हम लोग एक-एक करके आंसर करेंगे एंड अगर किसी पे विल सी इफ समवन वांट्स टू कम एंड एक्सप्लेन देयर एंड हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वो भी but we'll start with the few points that we had in the in our announcement section in the whitelisted announcement. So basically, I think the first and foremost and very important thing is about how will you connect into the server, right? So everything is in a single line हम लोग के website के through ही जाता है. All connections in the game are through the website only. So soulcity.gg is your friend. Whenever the server is up, when you guys see the announcement, go to Soulcity.gg, open your dashboard. There'll be a connect button that you guys see there. वहाँ पे आप connect press करोगे, you'll be able to get into the server. It'll automatically ask you in a pop-up to launch 5M और जैसे ही आप उसको allow करोगे, it'll automatically start connecting into the server. That is your only way to connect. With that said, अगर अभी कभी आप disconnect हो जाते हो for any reason, you crash, you basically just have to go to the website again. I mean, it doesn't expire, so you can keep it open in the background, or it'll be able to get you through. For some reasons, I feel, matlab, for some infra security wise reason, not some reasons, यूसेज ऑफ आई थिंक कोई भी एग्जिट लैग टाइप का एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी कनेक्ट करने में. यू शुड बी एबल टू कनेक्ट नॉर्मली विदाउट एनी यूज ऑफ दैट एप्लीकेशन. स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं नेटवर्किंग रिलेटेड तो वो ओपन कर सकते हैं एक टिकट एंड विल उनका जो एग्जैक्ट उनका आईपी है विल रन इट बाय आवर होस्ट एंड विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर देम. ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन थिंग. अभी आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज वी जस्ट लॉन्च्ड आवर स्टोर एंड आई सॉ कि अ लॉट ऑफ यू हैव already got priorities for your day one. दो queries थी that I really want to clear. First is all priorities will जो उसका validity है starts from the day server kicks off. So the second server starts आपका time उस दिन से count होना शुरू होगा first. And second is अभी बहुत लोगों को अपने डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, उनका प्रायोरिटीज अभी भी नन दिख रहा होगा. So do not worry. The team is working to make sure कि before launch आप सबका priorities वहाँ update हो गया होगा. So do not worry about that factor at all. Okay. Rishit, fill me in if I'm case
मैं कुछ भी मिस कर रहा Before हूँ? moving ahead, very sorry everyone, and this is no joke, no prank. Server एक दिन और बस delay होने जा रहा है. It's gonna be on second instead of first. क्या बता रहा हूँ The major reason behind the delay will be it's हमारे जो partners है server में अन्ना Velocity Gaming VLT, as you must all know. He and his entire staff is busy. All the creators are busy tomorrow as उनका कल semi-finals है and वो लोग available नहीं होंगे तो it's not fair to launch the server without them. And second को Lex भी आ जाएगा. So we have a win-win situation in all terms. So very sorry for again a day delay, but nothing can stop it from launching on second. We know it's been tough. आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट एक दिन की बात है. आप लोग भी मैचेस देखो कल, वीएलटी को सपोर्ट करो एंड Yeah, परसों guys, से we लेट्स गेट need गोइंग. to. या But I think, I mean, just to keep you guys company, because we all will be watching the match. So, if you guys would want, हम लोग will create a VC. या We'll sit here and watch the match together. ठीक है? So, ऐसे dishearten मत हो. कल we'll do something. It's important to support the team, guys. So yeah, I think हम लोग भी miss out करेंगे अगर हम लोग कल खेल रहे होंगे, right? So yeah, don't सो worry, हम लोग will या keep you guys company. एंड regarding second, we'll make it live at 7 p.m. or 8 p.m. Probably 8 p.m. So Yeah, we'll most probably decide, 8 but p.m. yeah. So 7 या 8 बजे second को it will go live. It's just about one day, and I think you guys are smart and patient enough कि एक दिन और wait कर लो चाहे इतना रुके. Yeah, But let's move ahead with the Q&A. Sorry. okay. ठीक है. Okay, so I'll take it further from there. Um, okay, so connections के related I've told. Second very important thing is, guys, creating realistic character names. Um, when I say realistic character names, आप लोग जानते हो, जब भी आप कोई नाम रख रहे हो, आप एक बार just give it a very hard thought about कि क्या ये कैरेक्टर IRL एग्जिस्ट कर सकता है इस नेम के साथ. अगर कर सकता है मतलब यू आर टेकिंग द राइट कॉल. अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने नहीं सुना है या प्रॉब्लम मैं कभी सुन भी नहीं पाऊंगा, देन यू आर डेफिनेटली यू हैव टू रिजेक्ट दैट नेम योरसेल्फ. ठीक है? इट्स अ वाइट लिस्टेड एनवायरनमेंट, गाइस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज के लिए आपको मॉडरेशन की जरूरत पड़े. आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइस हैव टू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. ठीक है? डूज एंड डोंट्स इन इनिशियल फेज, आई थिंक try to start following your RP. Everyone is arriving new in the city. ठीक है? You can plan out your story. आप अपनी story उस हिसाब से plan करो कि आप new आए हो, purpose क्या है. I mean, those things I don't want to spoon feed a lot. Even for, I would say, the emergency services, server on day one will just start as a place where they arrive, they would go, they would request their job, everything will fall into place. तो डे वन है, एक्सप्लोर कीजिए. डे वन ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ कॉप, इफ यू आर अ डॉक्टर, आई मीन जस्ट इल जस्ट बी वर्क फॉर यू. सर्वर में वी हैव मेड श्योर दैट देयर आर थिंग्स कि अगर वो लोग डे वन अगर वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, देर एक्सप्लोरिंग फॉर देमसेल्व्स. It will still be, there'll still be a lot of things to do, and everything would be functional for them as well. वो कहीं पे उनकी RP restrict नहीं होगी for day one. I'm pretty sure it's gonna be like more interaction for sure. तो उस चीज पे फोकस करें. And very, I think if it's not here already, for all the people who are whitelisted, यहाँ पर एक bugs and issue. Okay, so let me, I can screen share here as well, right? It will be public by tomorrow. तो फिर भी जस्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल आइडिया, इज ऐसा एक चैनल आप लोगों को दिखेगा स्टार्टिंग टुमारो. एंड दिस इज बेसिकली, इफ इन केस यू फाइंड अ बग, आप लोग हम लोगों को अगर हेल्प करते हो, इट विल बी, द डेवलपमेंट प्रोसेस वुड बी मच स्मूदर. एनी बग दैट यू फाइंड, just come here, create a new post, put क्या bug है,
If you have a video, अगर आप shadow play use करते हो, amazing, put a video here. Or just put the steps to reproduce कि वो bug तक आप कैसे पहुंचे. How do you think कि that bug can, would happen again for someone else? So this is important to have a much faster process, guys. Since this is going to be constantly under development, हम लोग constantly कुछ ना कुछ develop कर ही रहे होंगे. Bugs is something which you cannot dodge. But I'm pretty sure कि if you guys keep educating us, we will be able to clear more bugs more quickly. Okay. So that is one for sure request that I have. So ये अभी सेटअप हो रहा है. Like this is still being set up. We are setting some tags and things जिससे particularly आप लोग राउट कर पाओ कि कोई बग अगर आपको मिला है तो वो किस डायरेक्शन का है, नेटवर्किंग रिलेटेड है या फिर कुछ और है. सो we'll make sure कि वो सब चीजें हों. तो कल के बाद से you guys will have access to that, or anyways whenever you guys in the server, then only uska usage will make sense, right? So now I think, guys, if I missed anything, nahi to we can just move to Q&A. I guess you haven't. I mean, बीच में कुछ PTS के याद हो तो then we can, obviously continue. Okay, so we can start. Okay, so first wala ka to I think we have answered. Pandey ji, thank you for asking, but I think that question has been answered. Okay. Server 5M पे होगा, Ronan. चार Yeah, बंदे so देख that's जल्दी gonna से be in like कर दो 5M, चैनल but को, let's I go. think people already answered. Okay, so moving on. Steam required to be running in the background for sure. Eman's, I think without Steam running in the background, आप नहीं खेल पाओगे. Steam is where we use it as an identifier to identify कि who's playing. तो वो बहुत important है. So please make sure कि you have Steam running in the background. Then let's read Havers. So first, for EMSRP, person comes with bullet inside his body and says, "Jaldi treat karo." Is it not possible? So please understand, if EMSRP takes time. ये मैंने last में cover किया था. I think you guys need to show some, you know, थोड़ा तुम लोग को रिस्पेक्ट शो करना है टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ आरपीस जो कि आप लोगों के लिए है सर्वर में. दीज आर मोर हेल्पफुल टू यू. Though we have made ki there are a lot of mechanics which will restrict you to do jaldi treat karo now, but I feel कि हम लोगों को नहीं लगाने की जरूरत पड़नी चाहिए थी वो चीजें. I think you guys should have been able to do it yourself. So I think starting on the right foot, मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक इस बार आप लोग समझोगे इसको. So that is important. Possible ban the word RR in RP. Saying हमेशा RR करता है about a certain someone creates wrong impression for that person RR. So पहले तो I think there is, so the problem with this sentence is like तो it's the character and the IRL self should be very separate. तो even though कहते हैं, I think if it's being said in
देयर कुड बी सेम लाइंस जो दो तरीके से बोली जा सकती हैं. अगर इन अ डिस्टेस्टफुल मैनर someone is saying those lines and those words for someone, I condemn it personally. I think that is not right. That should not happen. But if it's directly to the character, I mean, I think people do have, matlab, should have that privilege to, attack each other's character in RP. I mean, that's for sure. स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग गैंग आरपी, मैंने ये चीज नोटिस करी है, गैंग आरपी में एक बहुत बड़ा पर्दा लोग लगा लेते हैं इस चीज का कि अ, हम तो गैंग है, कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, चाहे पीडी हो चाहे सिविलियन हो. सो आप थोड़ा सा कंसिडरेट होइए. एंड आप खाली आरपी तक के लिए गैंग है, रियल लाइफ गैंगस्टर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सब आरपी करने आए हैं. तो थोड़ा सा उस चीज को लेके, एंड द पॉइंट सेड आरआर एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टर्म्स गिवन टू फ्यू पीपल, एंड उनको जब भी मिलना एंड डेलिबरेटली इस तरह की बातें करना, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट. अगर किसी सामने वाले इंडिविजुअल को अच्छा नहीं लगेगा, वो टिकट रेज करेगा, actions will be taken. So be considerate about it. आगे से please. Thank you, Goli bhai. And last is humble request to the entire staff and the people doing RP in Soul City. Civilian RP is a beautiful thing, guys. Don't let it die. हम लोग, जैसा कि I think कल मैं और गोली भाई की स्ट्रीम पे हम लोग बात कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड. और अपना आप लोग इमेजिनेशन रिस्ट्रिक्ट करके क्रिम मत करने. जस्ट बिकॉज इफ यू वांट टू डू सिविलियन आरपी एंड आप क्रिम इसलिए करने लग गए बिकॉज यू थिंक कि देयर आर नॉट इनफ थिंग्स टू डू, ऐसे मत. ऐसा ये थॉट प्रोसेस बंद करना पड़ेगा कभी ना कभी. आई थिंक द वे यू गाइज नीड टू थिंक इज देयर इज एन आइडिया विच यू गाइज थिंक ऑल्सो इज फीजिबल, जो हो सकता है, वो आप लेके आओ एंड विल डू दैट. एंड बट फॉर दैट यू नीड टू शो प्रोग्रेशन ऑल्सो. ठीक है, सिर्फ आइडिया ही जरूरी नहीं है, यू नीड टू शो प्रोग्रेशन आफ्टर इट. ठीक है, तो अगर आप करोगे तो इट विल बी अमेजिंग. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लान्ड. आई एम प्रीटी श्योर कि यू गाइस विल लव इट. तो फॉर श्योर यू नो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक एस्पेक्ट है. विल मेक श्योर कि देल बी मैकेनिक्स जो डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे फॉर इवन गैंग्स टू रिलाई ऑन civilians for a lot of things in future, जिससे कि देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. ठीक है, तो काफी सारी चीजें जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं कि विथ वीएलटी रोल प्ले इट वाज एजुकेशनल फॉर अस. तो हम लोगों ने काफी लर्न किया है, दैट वाज लर्निंग फॉर अस. and a lot of things we've already implemented and we'll keep doing that. Okay, so we keep going back and forth. Okay, so moving on to the next one, is the server low end PC friendly? If it isn't, can we apply FPS mod? As Godibai said, um it is very optimized right now, जैसा कि मेरे को लगता है for sure. एंड आई डोंट थिंक कि आपको कोई FPS मॉड लगाने की जरूरत पड़ेगी एरीज. Try playing the server. It should feel very optimized. Else open a ticket. Let us know क्या problem हो रहा है. We'll see कि if it's entirely कुछ एक script is becoming a reason for people having a hard time or an MLO or anything. We definitely want to know that feedback. But अभी जैसा कि हम लोगों का feedback है, in I think usually we will be 10 to 15 people while doing aggressive testing. तो उस टाइम पे वी हैव हैड रियली गुड रिजल्ट्स. तो अभी तो मेरे को वो चैलेंज नहीं दिखता है. और नंबर ऑफ स्लॉट्स वी वांट टू स्टार्ट समवेयर स्लो एंड देन ग्रो. सो 120 100 के बीच में कोई विल पिक अ नंबर. इट्स नॉट दैट कि हम लोग चाहते नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले दिन एंजॉय ना कर पाए. द ओनली रीजन ऑफ वी डूइंग दिस इज कि दैट विल बी द स्ट्रेस टेस्ट फॉर द सर्वर. एंड वी वांट टू मेक श्योर कि जितने भी खेलें they get the best experience rather than we push it to a limit जहाँ पे so धीरे धीरे slowly and gradually I think we take baby steps on server slots. What time server launches? I think between 7 and 8, guys. Till when will all the PD responses come?
So, Flash, By tomorrow evening, around 5 o'clock, everything will be up for PD responses. thank you. Okay. Any idea server slots कितने होंगे? Reconnect Trio कितने time का मिलेगा? Cadbury, can you tell me how much is the reconnect Trio time? Reconnect time will be for 5 minutes. For 5 minutes, guys. So 5 minutes, we also felt ki would be more than enough for anyone who has crashed for genuine reasons would be able to reconnect into the server. If we didn't took any prior pass, then how long does it take to connect? I mean, are we gaming? This is a really difficult question for me to answer. I think there's no right answer to this question. Okay, so we'll know. We'll know. Apparently, after few days of server running, you would know ki what times are easier. Like I mean, what things I think are more analytics rather. उसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है, so OGX, can we pick a name inspired from anime? Yes, you can. मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आपको कोई नेम पिक करना है, just think of it in a way कि can this be a name of a character IRL या फिर fiction? In fiction आपको बस ये सोचना है, जैसे in anime I see a lot of I also follow a lot of anime, तो कभी alias होते हैं. Aliases cannot be name. एलियस कैन बी समथिंग जो आप लोगों को बताओगे जब वो आपसे पूछेंगे, बट आपका जो आईडी कार्ड होता है, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू हैव शुड हैव अ प्रॉपर नेम. ठीक है, सो अगर मेरा नाम, लेट्स से मैं चाहता हूँ सबको कि वो मेरे को आई मीन एनीथिंग, इफ आई से कि मिस्टर एक्स बुलाए मेरे को, सो फॉर देम टू कॉल मी मिस्टर एक्स, इट कैन नॉट बी माई नेम. लेट्स से माई नेम वुड बी लाइट एनीथिंग और हान लुई वटेवर जो मेरे कैरेक्टर का नाम होगा, जब मेरे से पूछेंगे नाम क्या है, आई कैन टेल देम कि ये नाम है मेरा, विच इज मिस्टर एक्स. सो दैट इज ऑन मी, बट माई डॉक्यूमेंट नीड्स टू शो द रियल नेम. सो ये हो गया. Can we keep a different in-game name other than the backstory given during the whitelist form? हाँ, मतलब अगर if you have follow the same backstory, but अगर name is becoming an issue जो अगर realistic नहीं था, वैसे हमने अभी तक शायद we have given people windows, काफी सारे लोग होंगे आप लोगों में से जिनके हमने टिकट ओपन करके उनको बोला है कि आपका नाम रियलिस्टिक नहीं था, but we liked the backstory so we whitelisted you. I am saying, I'm telling you guys again कि we have been super lenient on that, but going forward हम लोग नहीं रहेंगे. So since अब हम लोग multiple times बता चुके हैं कि थोड़ा सा realistic name रखना है, so moving forward जो whitelist applications होंगे उसमें will be rejecting on basis of those kind of names. So अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, but for now I think you can change, but do not change your backstory, at least until if you want to inform the team. Please take care of unrealistic jumps and stunts, and people should have fear of death. This will improve more realistic way of doing. This is a player driven rule. मतलब इसमें जितना हम मैकेनिक साइड से टेक केयर कर सकते थे घोस्ट ओपी, आई थिंक हमने कर लिया है. जो चीज़ें इसमें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि जब इफ़ आई पॉइंट अ गन एट यू, वो फेयर जो है वो आपको अपने माइक के थ्रू ही शो करना है. तो दैट इज एंटायरली ऑन द रोल प्लेयर एंड वील Like कीप अ book? वेरी क्लोज आई फॉर पीपल टू मेक श्योर कि वो फॉलो करें, बिकॉज विदाउट दैट देयर विल नॉट बी immersion. Will there be entry without? There for sure will be. I mean, it's not required. It's just something which gives you priority, matlab, in the number of slots. इमोट बाइंड गाइज, आई नो दैट आप लोगों ने बहुतों ने 5M से इमोट बाइंड्स करके रखे हुए हैं. सो सैडली द टीम इज स्टिल वर्किंग.
on restricting you guys to do that. But मेरा request है, because since everyone is here, I would highly recommend you guys to stop doing it. Just stop using the emote binds for, you know, gaining advantage. Emotes is for, emotes आप लोगों के रोल प्ले एक्सपीरियंस को enhance करने के लिए हैं. Emotes आपके you know, emotes are not there for, you know, making you, you know, have a upper hand in situations. ठीक है? So do not misuse emotes. And you know, वो binds अगर हैं तो वो निकाल देना प्लीज. कैफे कौन सा आएगा? अरे भाई, आई मीन दिस इज समथिंग आपको आरपी में जाके एक्सप्लोर करना है. दिस इज नॉट, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, गोइंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कि अगर इफ़ यू गाइज हैव योर स्टोरी इज दैट यू आर अ बेकर, तो तुमको ये सोचना है कि यू विल बी अ बेकर ओनली. और अगर इफ़ यू वांट टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप, इट विल बी अ कॉफ़ी शॉप ओनली. डू नॉट थिंक कि सर्वर में अगर मैं आज बर्गर शॉट डाल देता हूँ तो यू विल बिकम पर्सन who makes really amazing burgers. नहीं. Your backstory should stick to what you have written. वही रहनी चाहिए. और मूविंग फॉरवर्ड हम लोग जो एसेट अवेलेबल होंगे उसके वो करवाएंगे. डू नॉट थिंक द अदर वे. ठीक है? देर इज आई थिंक इस पर यू गाइज नीड टू थिंक डिफरेंटली. ठीक है? प्लीज चेंज वीसी रीजन टू इंडिया. ओके, नाइस पीडीएस. बट कैन यू चेक रीजन क्या है वीसी रीजन? Currently it's Singapore. सिंगापुर क्या is every is like, can you guys put an off topic chat if a lot of you are having problems with it? Yes, since most of people are okay, so we'll keep it this way. अरे इथं गोल्डी भाई मजा घेतात ते आहे. ठीक है. So where are we? So ये हो गया है. तुझा वर I got disconnected and can करू we आता will get disconnect priority. Yes, 5 minutes reconnect prior. तू गोल्डी भाई मजा घ्यायला लागले त्यांचे फ्लॅश आणि ते What about LSPD interviews? When are they gonna help? Ratio, this is what your character needs to do, right? यस यस So you have, just for your scenario, let's say एकच कॅरेक्टर असं कि आज देणार you आणि दुसरं कॅरेक्टर already घ्यायचं know असेल तर that मग you पैसे have I mean कोई ना विल a ब्लास्ट इट interview अंडरग्राउंड letter परत छोटा from a department, and your character, let's say, arrives in a new city. इट्स So अलाउड just विच be ग्राफिक मोड creative and think कि ऑन द what he सर्वर should do. लाइक ठीक इट्स है? अलाउड And you will know you will get answers to this. बीए और कंटा ओके एएफके की हे Okay. सर्वर में एक Slots कंटा already covered. Slots. A lot of people have slots question. Okay. So I think काफी सारे questions जब हम आंसर कर रहे थे, you guys had अरे 2 repetitive एप्रिलला झाले questions. आता So 2 एप्रिलला परत चालू होणार okay, server. are उद्या crosshairs banned? म्हणलं उद्या मस्त स्ट्रीम Server will have its own crosshair. External crosshairs are banned. ठीक है? I hope मतलब I'm clear on this कि सर्वर में ऑलरेडी एक क्रॉसहेयर होगा. So okay, so you know, I'm saying that, you know, external crosshairs will be banned. So फिर से LSPD के फॉर्म्स ओपन होंगे? डेफिनेटली होंगे. दिस इज द फर्स्ट बैच. So yeah, for sure they will open. Rashid, do you want to take few, or Rishit or Flash? Anyone? Are we on the I'll ju- Kalash point, right? yeah. I'll just be back one second. So Kalash का point is basically परमा के बारे में. So हाँ, परमा परमा. is never forced. Mutually जब decide होता है तभी होता है. So
if there's any RP scenario ongoing और ऐसा कुछ lead हो रहा है जिसमें there's an encounter या फिर कुछ ऐसा scenario जिसमें you can do a perma, you want to do a perma for your character, तब then you can tell the other guy कि हाँ I want to take this way. So ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तभी पर्मा होता है, नहीं तो पर्मा कैरेक्टर कभी मतलब फोर्स नहीं करते हैं पर्मा करने को. सो आई होप कलाश दैट इज गुड. हाउ अबाउट अ लिमिट टू डू जॉब सो दैट ग्राइंडर्स कम हो जाए लो. सो एवरी जॉब माइट हैव अ कूल डाउन और वो सब तो मैकेनिज्म से सेट करा हुआ है. सो ये चीज़ तो आपको सर्वर में जाके ऑनेस्टली फाइंड करनी पड़ेगी कि हाउ वी आर गोना प्रिवेंट द इकोनॉमी एज वेल एंड हाउ सर्वर आगे कैसे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा सो दैट इट वोंट लाइक फ्लड विद ग्राइंडर्स एज वेल. और देयर इज मोर वेरी कूल स्टफ आगे. सो ये चीज़ उसमें फिगर आउट हो जाएगी. बट स्टिल सजेशंस आर स्टिल अप. सो जैसे जैसे आप लोग खेलते जाओगे तो उसमें हमें भी सजेशंस देते जाना, बग्स एंड इश्यूज रिपोर्ट करते जाना, तो दैट विल हेल्प अ लॉट. So yeah, I'm back. Thank you. तो आई थिंक डिड यू आंसर दिस? क्या सोल्सिटी Yeah. में क्वांट भी यूज कर सकते हैं? आई थिंक वी यू गाइस कांट. क्वांट भी डजंट वर्क. विल बी ऑन प्योर मोड लेवल 1 गाइस. सो आई थिंक जिन लोगों के मन में क्वेश्चन है उसका आंसर इससे हो जाएगा. एनवी वर्क्स फाइन, क्वांट भी प्रोबेबली वोंट. तो कुछ मॉड्स हैं जो नहीं वर्क करते, बट दिस इज फॉर यू गाइस ओनली बिकॉज दिस इवेंचुअली एड सम सिक्योरिटी. So yeah, okay, nice question, Flash. चला सकते हैं चॉपर रोड पे, बट वो चलाते चलाते वो रास्ता जो है वो सोल सिटी से बाहर जाता है, वो वाली जो रोड है. That's what I wanted to address over by that question. Thank you, Light. ठीक है, तो the HUD will have thank you to Mozart, the HUD has a altitude meter, so थोड़ा रोड पे नहीं चलाने का. Okay, अगर या तो ऑल्सो अबाउट रेजोल्यूशन लो कर सकते हैं. हाँ, रेजोल्यूशन यू कैन लोअर रेजोल्यूशन, बट एस्पेक्ट रेशियो यू कैन नॉट चेंज. ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो इज अ थिंग वी वांट कि वो स्टैंडर्ड ही रहे. स्ट्रेच रेजोल्यूशन, वी रियली डोंट वांट द गेम टू बिकम, यू नो, वी वांट इट टू बी मोर चिल एनवायरनमेंट. हम लोग ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स हैं जिससे कि इट विल बी मोर रियलिस्टिक इन नेचर, तो वो चीज़ें उसको फोर्स करती हैं. सो इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस टू, विल सी, बट आई थिंक इट शुड बी गुड. मतलब इट शुड बी समथिंग न्यू. क्या क्या ओके, अगर सारे devs, ओके क्या guys, I saw a lot of our devs, they got interviews with cops. So can we start our character progression from day one, like not completely jumping into progression, but step by step? You definitely should, because see the way we are setting you up in the server, Afi, कुछ इस तरह से it's picturized that you are arriving into a new city, and that's why if you guys have not अभी तक hint pick नहीं किया आप लोगों ने, तो in our graphics हम लोग we show boarding passes, tickets, airport lobbies, काफी सारे वो जो elements हैं, they are not just for cosmetic or you know वो we wanted you guys to you know pick from there कि you guys are just arriving to a new city. Pretty much no one there would be claiming कि मैं बहुत पहले से हूँ यहाँ पर. Everyone would be that you know we know a little bit. Try to explore as much as of you can. ठीक है, so which graphic modes are allowed? ऐसा
प्योर मोड 1 के अंडर अगर आपका कोई भी ग्राफिक मॉड चलता है इट्स अलाउड, जैसा मेरे को पता है शायद क्वांट वी डजंट वर्क बट एनवी वर्क्स फाइन। एएफके के क्या सर्वर में यस होना चाहिए। सो व्हाट अबाउट कॉप प्रायो फॉर कॉप मेन कैन वी नो लाइक कब से होगा so that we can take normal Friday. Okay. So to address cop priors, there will be department priors for everything जहाँ पे department related role play involved है, which is either cop or EMS or DOJ. I mean, I think we'll try to cover a decent amount, enough amount of number. Your cop prio only applies to, let's say you're a cop and the server has provided you a cop prio, वो सिर्फ आपके cop character पे ही apply होगा। मतलब the moment you select to connect with, और अगर आप opt करते हो कि आप cop prio के through server के अंदर connect कर रहे हो, तो जो आपके character selection screen होएगा वहाँ पे you will only be able to select your cop character और EMS character और कोई भी department related character ही आप select कर पाओगे वहाँ पे। तो वो आपका start होगा। I am so there is a NRP thing planned for all the cops when they will get their roles. इस बार टाटा Immediately आईपीएल जैसे ही आप सिर्फ लोगों जियो को सिनेमा roles पर। मिलते हैं आपके, you guys will have the department prior. ऐड वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में हो जाएगा। आप लोग लियो जनरल ओसी में डिस्कस कर लेना। फ्लैश में भी इफ ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट हियर और लेटर he can do it. He knows more and Flash, I think, or Rankit can tell you guys more. But the moment you guys will have roles in the server and cop mains, उन लोगों को cop prio के लिए we'll start adding those priors. ठीक है। We're talking about priors, right? Cop priors. I just want to add one more thing, guys. Your contribution inside the server also, as a cop, also matters in priorities. So keep that in mind if you're a cop main. Yeah. Just wanted to clear that. Not cop, I think I'll speak for all the departments. So Rishit hai here from DOJ, and then I think we don't have Tajinder or Sky, but Shampoo is here. So for EMS, for DOJ, for every place, it's obviously जो cop prio, we expect you to make your good use of that prio that the server is providing. तो आप आए and you give your contribution. So we'll make sure कि हम लोग उस पे we'll monitor it very closely. Okay, so there should be a time frame also for criminals and robbers for their situations. Other than singing songs for robbers, the hostages are not getting any role play. Sometimes they just tell hostages to stand at the take more than 2-3 hours in of their unplanned robbery. ठीक है, I understand कि हाँ, I know it's very important. Some scenarios get a little heated up. Though I see a lot of times people having fun with hostages as well. Character पे depend करता है. If someone's character is a little like humorous, funny, and they're still criminals, वो कर रहे हैं आपके साथ, I think justifies. I cannot enforce sec on this, but हाँ, be mindful guys. थोड़ा सा all our players and ये environment जो है वो this whole यार लाइट भाई, environment कोई अगर हॉस्टेज बनाया तो हॉस्टेज को वहां पे एंटरटेनमेंट तो कराएगा नहीं यार लाइट भाई, तो बिल्कुल वो तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। सो इसलिए दैट इज थिंग कि वी कैन नॉट एनफोर्स दिस, वी कैन नॉट डेफिनेटली हाँ एनफोर्स दिस। आप बी माइंडफुल। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने पास्ट सिचुएशंस में देखा, अभी मैकेनिक्स कैसे होंगे दैट यू गाइज डोंट नो, सो मैं कोई assumption अभी तुम लोग को नहीं देना चाहता, बट व्हाट आई थिंक इज कि लेट्स से आप किसी को हॉस्टेज बनाते हो, आप किसी पोजिशन लाइक पॉइंट तक पहुंचते हो जहां आपको कोई भी हाइस्ट इनिशिएट करना है और आप देखते हो कि अभी कोई हाइस्ट चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको लेके घूम रहे होगे, राइट? यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर दैट पर्सन्स टाइम एंड यू हैव टू रिलीज हिम। सो थिंग्स लाइक दैट, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये खुद ही हो जाना चाहिए, राइट? तो दैट्स इम्पॉर्टेंट।
डीओजे रिस्पॉन्सेस कब तक ऋषित? Responses will be out before the launch. Anyways, वॉक इन इंटरव्यूज होंगे तो आप सर्वर के अंदर जाके फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा जब भी लॉन्च होता है, तो या ऑल्सो वन मोर थिंग, आई सी पीपल passing comments in the PTS channel. Please like maintain the decorum. There is off topic chat, you can continue over there. Okay. So how are we going to counter the aggression of gangs towards civilian, because every gang member क्या कर लेगा and then have resources, everything to suppress. ठीक है. So Ferdin, I think if you already heard me say, what I said was कि कोई एक dependency हम लोग create करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक वो गैंग्स अपीयर होंगी आपको दिख जाएगा ऑलरेडी कि देयर विल बी gangs will have to rely for some stuff to get from civilians in order to progress in a lot of things. And with that, I think gangs अगर smart होंगी तो they will understand कि उनको सारे civilians से अपना relation कैसा रखना है. ठीक है. So with that being said, I think that should probably answer your question. I think जो आप पूछने की कोशिश कर रहे थे. जिनकी बैक स्टोरी पीढ़ी से रिलेटेड नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी, तो क्या हर कोई फिल कर सकता है? और फिर आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, तो अगर आप चाहो तो यू कैन मे बी थोड़ा सा इसको डिटेल में डाल सकते हो, बिकॉज पीढ़े में अगर तो बैक पीढ़े स्टोरी फॉर्म उनकी पीढ़ी की नहीं है और वो फिल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि क्या वो दूसरा मैकेनिक कैरेक्टर खत्म बना रहे होंगे शायद. So there could be multiple मैकेनिक scenarios, जरा but सुन if you बात want आप थोड़ा सा मतलब you can put your question again थोड़ा डिटेल में, will come back to it. FT cooldown कितना है? Yeah, but I don't think really see Maxter 6 हो गए that ओके these things should कोई नहीं matter. I mean अगर आप AFK हो 5 मिनट भी तो I think you should get kicked. See, there'll be people, if let's say there are people in the queue and you're AFK in the server, then you're already doing injustice to someone. ठीक है? तो 10 मिनट 15 मिनट फर्क नहीं पड़ता इन क्वेश्चन से, आई फील. बात तो टफ सही सर्वर मत रखना, पता चले लॉक पिक करने के लिए रोना रह गया जब किसी अब ये मतलब बहुत ही वियर्ड आस्क है, बट अगर आपको लगे कि आप लॉक पिक नहीं कर पा रहे हो तो देयर कैन बी a very civil way to live in the server also, I guess. पड़ता in question से, I feel. और नहीं कर पा रहे हो तो that is your character's flaw, right? Okay. अगर FPS नहीं आए तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर सकते. एस्पेक्ट रेशियो ठीक है. आई थिंक आई कवर्ड इट. 16:9 works. 4:3 doesn't work for sure. और भी हैं रेजोल्यूशन, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज वाइट लिस्टेड राइट नाउ, बट आप वो चेंज करोगे तो द सर्वर विल गिव यू नोटिफिकेशन. अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोगों के लिए तो इट विल आस्क यू टू चेंज इन 30 seconds और समथिंग, और एल्स यू विल गेट किक्ड फ्रॉम द सर्वर. मेरी बैक स्टोरी पीडी की है, लेकिन फर्स्ट टाइम हैप्पी विद सिविलियन. इज इट ओके? यस. इज देयर एनीथिंग कॉल्ड कॉपराइव? आई थिंक जिमी आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. क्या हेली से कट के बंदा Milind, गया Rose, हूँ एंड मिलेगा बाय मिस्टेक? क्या हेली से कट के बंदे मर गए? सो वो इट्स नॉट से ओके, लेट्स नॉट गो टू बैन, बट वो डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन है क्या एंड किस पर्पस में किया गया है. बाय मिस आई मीन ओके, सो बाय मिस्टेक यू हैव रिटन, देन ओके, आई डोंट नो हाउ टू इवन आंसर दैट क्वेश्चन. Any EMS department priors are there, guys. But again, जैसा फ्लैश ने बोला, you need to definitely show your dedication उस character के towards for us to keep वो
बहुत constantly review होगा. That one thing will be very under a very close monitoring. If the PC is slow, then what to do? 5 minutes I felt was decent. इससे ज़्यादा रखने का मतलब है कि then it will not हाँ बोल just be called reconnect prio. बोलना हेलो. Being very honest with you guys, 5 minutes से ज़्यादा हाँ reconnect prio, it will not fall in reconnect. It will just become a कुठली टीम मध्ये. priority at some point in time. EMS और crim एक साथ कर सकते हैं. एम आई. And also if we get selected for EMS, हाँ then हाँ characters buy करना पड़ेगा. So राहू दे I मला think this is a मी पुढे question मी that बघितलं. someone had. Okay, thank you for reminding me about character slots. So ते character सगळे slots, चन्ने definitely you have अक्षरशः to plan your characters. हम्म. You get one free slot from the server. आप नाही एक नाही character या मॅचला बनाएं, म्हणतोय ना. एक character खेलें. हा या मॅचला येतो. This is done with the intention हा हा to um, नाही फोन करत आहे. only बोल नाही have रामची. people who have made up their mind and are very dedicated to invest time on two characters. The whole point of the second slot or multiple slots being paid is this. We don't want कि आप disposable characters बनाएं which is like in between 5-6 दिन के लिए. अगर आपके मेन कैरेक्टर पे आरपी नहीं है तो फिल करने के लिए फिलर की तरह कुछ भी विथ लेस प्रोग्रेशन यू डू बैड आरपी. ठीक है. द पर्पस ऑफ डूइंग वन कैरेक्टर इज कि आई नो whoever it seems like an investment right now, but whoever would be very interested कि वो टाइम डेडिकेट करेगा अपने सेकेंड कैरेक्टर के प्रोग्रेशन पे उतना ही जितना वो अपने फर्स्ट कैरेक्टर पे कर रहा है. I think then only it will make sense to buy. I won't say the reason I've not kept even two slots this time, or we all I think decided, it's not me. We all came to this conclusion is we felt कि we want to make sure we don't want to see those disposable character scenarios जहाँ पर people would just make a character for a few first days character and it'll because वो character डेफिनेटली फास्ट प्रोग्रेशन करेगा बिकॉज आप उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे. ठीक है. या what tier of prio departments get? It's a custom tier. um we will update you. I think your department head will update you a little in details about it. Abhi, I think we are still in little early stages about department prio, but I think it should be decent enough. also department prio or cop prio EMS whatever prio जो भी है वो that will be applicable to your only particular character, either it's PD, EMS, etc. Don't expect the perks given to the department prio to be gelled along with your second character too. So ये clear करना था बात. It will be only for your cop character only. अगर आप कॉप में से आ रहे हैं और आपका एक सेकंड कैरेक्टर भी है तो उस पे वो प्राय एप्लीकेबल नहीं होंगे. Okay. Yeah, thank you, Oliver. Thank you. जी. Can we get limitation on abuses? So guys, with abuses, I think मैंने इसके first half वाली meeting में cover कर लिया था. Streamer friendly है. It's something you're not comfortable. You have to just use local OC and ask the person to stop doing it. आपको immediately stop करना है. और also मैंने वो भी समझाया था कि you need to know कि नो योर ऑडियंस, नो योर क्राउड. जिन लोगों के अराउंड आप आरपी कर इंटरेक्शन रहे हैं उस करोगे टाइम, तो अच्छा लगता अगर है आप किसी को लोगों को भी, नहीं भाई हाँ पसंद यार है मेरे साथ या वो स्ट्रीमर नहीं बात कर रहा करते हैं, है, मेरे को भी अच्छा लगेगा डू कि आप नॉट लोग मेरे साथ स्टार्ट बात कर रहे विद दैट. फर्स्ट यू नीड टू असेस. जैसे रियल लाइफ में भी आप किसी से मिलते हैं, हाय हेलो, देन धीरे धीरे इफ यू सी कि ओके ही इज कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन यू गो टू दैट स्टेज. We are fine. I mean, obviously, we are not kids here. We know कि if you in a group is comfortable using that language अपने आपस में, we should not have a problem with it. But अगर किसी को problem है, but आप still उसके मना करने पे कर रहे हो, we will have a lot of problems with you then. Okay? Please do not do that.
कि मला पण मैं match ला मैकेनिक आला. में प्राय होती है नहीं. कुठलं नाव सांग. नाव सांग ना. Uh, I think we've covered बरं मग आता काय पप्पा आला तर most. पप्पा नाही का सासू पप्पा We've heard in the last one that snitching is not allowed. Yeah, that's not But allowed. It's as simple as yeah, that. Let's yeah, keep it simple. उसमें कुछ है ही नहीं कुछ बात करने वाला. स्निचिंग yeah. के नाम पे बहुत रगड़े हो चुके. So let's keep it away. So you're saying news reporter, private detective, investigator. So we would, if there would be a scenario जहाँ पे आपको लगता है कि you have to snitch, but you have proper RP, we would wanna see. खेला है आपने शैडो फाइट? हाँ Just खेला. open a ticket. Talk to us, okay? We wanna make sure कि आपके progression से बहुत सारे लोगों की RP नहीं खराब हो रही हो. So we wanna make sure कि that is being taken care of. Okay. Yeah. Forced RP is not allowed. Yeah, not at all. Any person feels that they're being forced for a certain RP, just use local OC. Okay. The audience of VLT RP, we know there are a lot of rules and about do's and don'ts. Most of the players there were so उन्होंने हम लोगों को अपने entertain किया. I want to request new people like me who got a chance to be here, try the best. So I think it's simpler. जो मैं बोलूँगा, the moment आप you get into the server, everyone is same and I feel कि उतने ही चांसेस हैं रूल टूटने के जितने आपके हो सकते हैं, शायद मेरे से भी टूट सकते हैं. You just have to be super cautious. Just make sure कि you read the rules. But I mean, it's all about enjoying the character, and I think it should be fine and should look nice. At least 2 characters should be free. I think already I have given a justification about it. We all together here feel um कि एक कैरेक्टर को प्रोग्रेस करने में it takes multiple not weeks but months properly progress करने में. I do not see a reason why people will have uh On will top need of that, immediately. people get inspired and talk about so many international servers जहाँ पे सिर्फ घुसने का $1,000 $500 लग जाता है. कैरेक्टर स्लॉट्स का $1,000 फीस है. So when we talk and preach lot of international things and server and we are bringing it in our own country and काय trying to राहतो रे make a काय आलं? change and call it as a premium server, I think we should respect that thing, isn't it? We've called it a lot of times. We are a premium whitelisted server. So let that be, and we have a lot of servers जहाँ पे बहुत सारे character free मिलते हैं. So you can always try those servers and अपना role play वहाँ पे दिखा के you can always attract your build your audience. I mean, like that could be as simple as that, isn't it? Right, Byee? I mean, I'm just saying, okay, guys, we are different because we are trying few things different. It's just if you want us to fall under the same pattern which has been happening, तो हम लोग कोई change ला नहीं पाएंगे. So that is what it is. Okay. A person has engaged with civilian RP, so does he need to fill any form for mechanic? नहीं. It'll see. So whenever mechanic RP start, जो server में जब भी start होगी, आपको किसी ना किसी सर्वर में देयर मल्टीपल वेज जिसके अगर आपको न्यूज़ मिल जाएगी और जब मिल जाएगी तो आप जाके वहाँ पे अपनी आरपी इनिशिएट कर सकते हैं. अगर डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल. अगर मैं ओनर हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों से फॉर्म भरवाऊँ, मैं इंटरव्यू लूँ डायरेक्टली, मैं लोगों से मिलूँ, दैट इज़ मी.
देयर कुड बी सम अदर पर्सन, जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि सम पीपल आर मोर When will MS's last game फॉर्मल, be? Will this be his last प्रोसेस season? ओरिएंटेड, We कुछ discuss लोग this थोड़े every season. We must कैजुअल discuss it अप्रोच this होता season है as well टुवर्ड्स because द गेम। formality तो करनी तो पड़ती है ना आई मीन number 4 इट्स होता है सिंपल, आप ओनर टू ओनर Oh डिपेंड yeah, करेगा। it's a आई डोंट नो question हु that will बिकम्स never be ओनर, answered. जो बनेगा उसके Actually, I was हिसाब looking से। at it and I was looking at contemporaries at his level. Someone needs to Yeah, how understand long they that we played are not post IRL their doctors international with career. Because limited what knowledge. हाँ happens is guys, guys they honestly, just do can't go not back to first class cricket. criticize So they'll top play players. only the Trust me. IPL and maybe some other Making leagues, fun and most or of them play probably WL. So not the two respecting examples I was EMS looking RP, at I was Gilchrist personally and will Vaughan. get very Yeah. So hurt Gilchrist, and Vaughan will probably not have a good conversation. ठीक है? They're trying. ठीक है? They're trying to give you a role player. I know कभी कभी कुछ गलत बोल सकते हैं, and we just have to have that थोड़ा सा leniency उनके लिए। हाँ, ठीक मतलब है? in this being said, the other way around, if we talk about doctors को लोग जो आके थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं उन चीजों को लेके, ये जो गैंग्स और क्रिम का हमने कॉप्स का अलग अलग किया है, अभी नेक्स्ट टाइम से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गैंग्स कृपया करके पीडी को उनका काम और एसओपीज ना पढ़ाए, सिंस आप लोगों को भी एसओपीज इन एनी फॉर्म और अदर वे राउंड पता लग जाते हैं। सो प्लीज गैंग्स को वो ना पढ़ाए, पीडी को ना पढ़ाए, बिकॉज पीडी इज ऑलरेडी डूइंग द जॉब, एंड द सेम गोज विद पीडी, कि वो गैंग्स को उनके रूल्स और उनके चीज़ों के बारे में, हुड एरिया एंड थिंग्स के बारे में जितनी आरपी नॉलेज है वहीं तक रखें। बस अब पुराने सर्वर्स की नॉलेज यहाँ पे लाके थोड़ा सा वो मिक्सिंग हो जाएगा, तो उसको थोड़ा दूरी रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ गाइस, इट्स ऑल लाइक कि जैसे आपको पता है कि आई मीन कि लीजेंड स्क्वायर कहाँ है या एमआरपीडी कहाँ है, एंड आई नो कि इट माइट सीम कि थोड़ी 2 रुपी एक्टिंग है फॉर डे वन, बट वो करना पड़ता है। ठीक है? फॉर 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 योर इनिशियल प्रोग्रेशन यू नीड टू just switch off a lot of things that you know about GTA and just try to live, मतलब live your character. ठीक है? I don't know much, but does food get 5? Yeah, food and everything else will have a lot of everything has DK. And there are a lot of things to be done from civilian point of view. आई थिंक इस बार कॉप क्रिम से ज्यादा आरपी सिविलियन के पास है, अगर करना चाहेंगे ठीक से। we've added lot of MLOs too and lot of features too, जिससे civilians को बहुत आरपी मिलेगी। So don't find out excuses to go into the crim side. We can always, like Heba said earlier, कि we can always promote civilian RP and उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। So उस माइंडसेट में मत जाना कि जाएंगे गैंग गैंग करेंगे, वॉर करेंगे तो ही हमारे पास वॉचिंग और ये सब आएगा। इफ यू आर ट्रूली एन आरपी प्लेयर, आप अगर अच्छे से सिविलियन आरपी करके कुछ कुछ भी करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, वी हैव अ स्टूडियो 2 जो हमने अपने लास्ट स्ट्रीम में शोकेस किए थे। देयर कैन बी मल्टीपल इवेंट्स डन देयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दैट, लॉट ऑफ सिविलियन जॉब्स टू। सो या, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं उस तरीके का। Yep. ठीक है गाइज, लास्ट फ्यू एंड आई थिंक 1-2 मिनट बाद बंद कर दियो ऋषित पीटीएस। ठीक है? एनीवन, ऋषित शैम्पू, एनीवन? आई थिंक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक अब रिपीट हो रहा है। Navya, I think your question is from last year's servers are ending, उनका RP gangs पे ज़्यादा focus होता है। Can we see something different this time? हम लोगों की तरफ से we have made sure, ठीक है? We have definitely made sure. That is, I mean, I know with introducing a lot of rules, it's a drag. वो अच्छा नहीं लगता कि हम बहुत rules है, so much to remember and all those things, but वो सब इसी माइंडसेट के साथ किया जा रहा है कि वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। ठीक है? कैन सिटी हॉल प्रोवाइड अ मॉर्गेज लाइसेंस फॉर बिजनेस इन द सिटी टू गिव लीगली लोन इज लीगल इन रोल प्ले? आई मीन प्रबल, हु स्टॉपिंग यू? आपको कौन रोक रहा है जाके आरपी इनिशिएट करने से? नो वन इज स्टॉपिंग यू, राइट? तो अगर इफ यू हैव दिस आइडिया, वो इनिशिएट द रोल प्ले। अगर हम लोगों को लगेगा कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा है, तो I don't see how that
cannot be done. ठीक है. I've never done PDRP before, but I'm all up for learning. Should I be worried about my interview? नहीं, I think the interviewers are already mindful of this situation कि काफ़ी सारे लोग हैं वो learning के लिए आ रहे हैं. And I hope you have a good experience while interviewing. Can player have two characters, one with PD, one with AMS, basically two government characters? I do not see a problem with that, honestly, Felix. Launch timing क्या है? Launch timing बता दिया मैं 7 to 8. Is there an auto shop job? Just RP it out. Compulsory to continue the backstory that has been filled in the form. हाँ, obviously. जो आपने बैक स्टोरी फिल किया है, जो हमने पढ़ा है, हमने उस बेसिस पे आपको वाइट लिस्ट किया है. अगर अब वो आप नहीं फॉलो करते हो या अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू ओपन ए टिकट. It's basically, I think, backstory is usually a very crucial point for us to whitelist someone. So, yeah. Backstory पण एक महिना आता है. How many gangs? I think you guys are just being way ahead of yourself. Just stop thinking about gangs. अगर आप सोच रहे हो आप ऑलरेडी अच्छी आरपी से स्टार्ट नहीं करने वाले हो, ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट. ठीक है, अभी इट्स द स्टार्ट, लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. अगर आई थिंक यू जस्ट थिंक अबाउट योर इंडिविजुअलिटी, आपका इंडिविजुअल कैरेक्टर का क्या ट्रेट्स है, उसकी क्या स्टोरी जाती है. जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट गैंग्स राइट नाउ. ठीक है, आई लिटरली वुड से कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई 2-3 हफ्ते तक सोचे भी. एक महीना भी पकड़ के चलो. लेट्स नॉट इवन थिंक अबाउट इट फॉर अ मंथ. ठीक है. Also, I think Goldie Bhai asked a very interesting question about from Logic. So yeah, Logic, you can respond to us in off-topic chat. But I think this is all from me. I need some water. पर अगर कोई भी और like we have the whole crew here. अगर if I missed anything, guys, please take it away. करा क्या था? कोई बोल नहीं रहा कुछ. Okay. So I think Goldie Bhai covered everything. I would suggest the crew जो हमारे टीम में जो बैन वैन का काम ज्यादा देखते हैं, वो लोग थोड़ा सा रेफर कर दे कुछ चीजों को if they want to, so that would be better. I mean like उन लोगों का end of the day काम आसान होगा, the less the tickets, the less the reports, and if they want to specially mention something like Rashid, Shampoo, Rusher, Flash, Cadbury, Yeah, Karthik, हाँ. is I want to mention exploitation mat karo, because we would be rigorously going through the logs and proper progression करो. पता चला हर दूसरे दिन तुम एक कुछ स्पॉन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं है, बट वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. एंड अगर कुछ बग्स मिलते तो बी ऑनेस्ट, पुट फॉरवर्ड द proofs, attach the proofs in the bugs channel, ताकि our developing team can fix it at topmost priority. Yeah, मत करो कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन. अच्छा ही लगता है बैन देना, वो भी परमा बैन. That's Guys, new start हो रहा है. I would highly recommend like progression पहले पॉइंट पे रखो कि मेन थिंग स्टोरी बिल्ड, प्रोग्रेशन, अच्छे से इंटरेक्शन. एंड ऑनेस्टली माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज टू रोल प्ले विद न्यू प्लेयर्स ज़्यादा. लाइक एवरी टाइम आई हैव डन इट कि इवन गैंग्स, अगर मैंने गैंग्स करी हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने मेजॉरिटी टाइम गैंग्स सेम बंदों के साथ नहीं करी है. सो दूसरे लोगों को भी आरपी मिलती है उससे, और उससे लोगों से इंटरेक्शन वगैरह भी बढ़ता है. तो प्रोग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम लोग प्रोग्रेस करो, जिन लोगों के साथ तुम्हारी आरपी बिल्ड हो रही है उन लोग के साथ स्टोरी बिल्डिंग करो, उन लोग के साथ एक्सप्लोर करो. काफ़ी नए लोग मिलेंगे तुम लोगों को साथ में, और उसके साथ भी आगे चल के बहुत अच्छी आरपी हो सकती है उसमें. सो प्रोग्रेशन की पॉइंट. बैंड्स, अगर कोई फेल आरपी वगैरह कर रहा है, ट्राई टू एजुकेट देम. लाइक जितना हो सके. ऑब्वियसली इन आरपी ओ सी मत चले जाना कि हाँ, बट लाइक थोड़ा बहुत उनको अगर तुम जानते हो या पता है तो एटलीस्ट ट्राई टू एजुकेट देम. अगर फिर भी
एक ऐसे एक्सटेंट पे हो रही है, तो यस ओपन अ टिकट, तो हम लोग ऑब्वियसली देखेंगे वो। बट ऐसा ऐसा दिमाग में लेके नहीं चलना कि भाई ये बंदा बैन ही करवाना है या ये बंदा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लेके मत चलना। नए आरपी प्लेयर्स भी आ रहे हैं काफ़ी, तो लेट्स ट्राई कि वो लोग भी आगे चल के अच्छे से आरपी करें। आगे चल के क्या पता वो लोग भी बहुत अच्छी आरपी दे सर्वर को। एंड सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोच के मत करना आरपी, मेनली ऐसा सोच के करो कि जिससे ओवरऑल सब सर्वर को भी, पूरे सर्वर को भी आरपी मिला। सो वैसे देखो कि सबको आरपी भी तुम बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के पीछे जाके या मैं बार बार एक ही चीज़ फॉलो कर करके आरपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू डू समथिंग जिससे तुम्हारी तरफ भी लोग आने की ट्राई करें, तुम्हें तुम्हारे साथ आरपी करना भी पसंद करें, या तुम ऐसा आरपी स्टोरी लाइन दो लोगों को कि उससे आगे चल के लोगों को भी आरपी मिले एंड सर्वर को भी आरपी मिले। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन मेन थिंग वो करना। और गैंग वगैरह का तो अभी गाइज मत सोचो, अभी तो टाइम है काफ़ी। गैंग में तो अब गैंग क्वेश्चंस भी मत ही पूछो, क्योंकि गैंग क्वेश्चंस भी बिफोर गैंग अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी, तो कोई एक मीटिंग रख लेंगे, वो टाइम पे गैंग क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। अभी ये मत सोचो कि हम लोग 10 बंदे 15 बंदे बैठ के आए हैं कि आगे चल के यही करेंगे। सो इट इज़ टू अर्ली स्टेज वो टाइम पे अभी ये चीज़ के लिए। तो अभी जितना हो सके एंजॉय करो, और अच्छे से एक कम्युनिटी बिल्ड करी जो है उसको, और लाइक लेट्स मूव इट फॉरवर्ड और एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। That is all For from my side. Crims, yep, thank you, Rishabh. For Crims, guys, I would like to add one thing. कि एक चीज़ ना बहुत ट्रेंड में हो जाती है, कई बार हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं. Let's say, being a crim, I'm doing robberies in the same way for a long time. एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, नो क्रिएटिविटी, गाड़ी ला रहे हैं, escape कर रहे हैं, that's it. तो इट यूज टू हैपन बिफोर कि यार लोग सोचते थे, प्लान आउट करते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विल टेक दीज काइंड ऑफ वेज, ये कार लेके जाएंगे. अभी नए नए प्लेयर आ रहे हैं, नया नया प्लेयर बेस बन रहा है, तो मे बी दे हैव मोर क्रिएटिविटी. जो लोग भी नई नई आरपी स्टार्ट करेंगे, तो ट्राई टू डू आरपी विद देम, प्लान आउट विद देम, एंड try to come up with some innovative things other than just एक गाड़ी लेके गए, उससे escape नहीं हो रहा, बैकअप आ गया, उससे भी escape नहीं हो रहा, तीसरी बुला ली, वो बैकअप आ गया. So do something कि आप लोग को भी मजा आए, काउंटर करने वाले बंदों को भी ज्यादा मजा आए. तो वही चीज है, थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी. I would like to answer the question asked by PP. Take sometimes like cops taking better lines than the racers. So in this, PD has a department named SCU, which handles the enforcement unit. So technically they are trained, and I guess you have done cop RP from like more than 2 years, so you should be knowing this thing. And on this, I would like to add Rishit के, as Rishit stated कि cops भी lines ले लेते हैं, cops उन लोग से पहले jump ले लेते हैं. ये जो होता है ना, कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आप कोई जंप के लिए जा रहे हो, कॉप आपसे पहले ले लेता है. ठीक है, ये आप ही लोग का सिखाया हुआ है उनको. आप लोग इस पैटर्न को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, वो लोग उस चीज़ से सीखते हैं, एंड देन दे डू द सेम. सो दैट्स व्हाट द थिंग इज. अब वही रेसिंग में भी अप्लाई होता है, वही रूट बार बार लोग जाते हैं, and फिर लोग सोचते हैं कि कॉप्स भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं. Why are और they जिम्मी जैसा expecting कॉप तो focus? वीडियो बना बना के डालता है, लाइंस की, ट्रिक्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, मतलब क्या बताएं, समझ में नहीं आता मुझे. टूटा. Anyways, guys, let's have fun. Yeah. Jokes apart, मतलब it's gonna be a very immersive experience. आप लोग को बहुत मजा आने वाला है. The way things have been put together. So try to make the best out of it. And जाते जाते please would like आप लोग, if you could all just appreciate our the entire dev team, led by Lex5 and the crew for the immense
hard work they've put in the last 20 days, particularly. Thank you everyone for joining. We'll see you on second inside the server. चलो guys. Guys. चलो फिर guys. All right, then we'll be wrapping up the meeting. गाइस मिलते फिर कल, टॉकिंग स्ट्रीम करेंगे कल. लेट्स गो. मैं भी अभी मैच देखता जाके. मैं गाने लगा था, 2 मिनट देना गाइस. चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में. बाय बाय, टेक केयर. कल अपन शायद यही टाइम पे स्ट्रीम करेंगे, रात के टाइम पे टॉकिंग करेंगे. शायद वैल्यू करूँगा. मिलते हैं, चलो कोई ना. बाय बाय, टेक केयर, सी या. सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता. शर्मो है आगे पर देखे राके करती है हमको खता. जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना. चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता. मैं भी वो रंगे जो निकलता मुश्किल से गले लगा जो किसी को. मुंबई के लोग बचे थके बुके काके सफर में निकला कुछ करने को. प्रत्येक शुक्रावाच्या अगोदर आई बाबा सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वप्रथम प्रणाम तुम्हा करुण में निकलो पैशाना साधन नसताना सब में नहीं अपन शेर पे राख सलाखों के पीछे अखबारों में नाम हुई बस्ती में देशक सबको के सलाम में को मस्ती में ले मतलब भाषा से पास के दिल में को ढूंढ कभी हाथ में नहीं आना. खुल कभी भूल कर भी सिंगल बना. तू आप गेम छोड़ कर डिग्री पा बन कर डिग्री देते साथी गई है. अब रांची आंदा तेरा ना, अब रांची आंदा तेरा ना. मैं होने लगी मेरे को हर एक दिन, हर एक सीन, हर एक दिन, हर एक मीम मेरे को याद आ रहा. मेरा बाप जाने का 4 बार धक्के से लगे पे माँ बाप ने झाड़ खरा. आज मेरे को समझा मैं क्या करा क्यों करा. खुद से दूर करा मजबूरी में कूल बना दूर बना तभी जाके घर पे मेरे दिल का फूल बना. गाली बड़ी तो फिर गाली पड़ी इनकी मारी बड़ी फॉर द गैंग. मेरी गाड़ी चली मेरी यारी घड़ी कला भारी पड़ी तो है फैम. तो माननी पड़ी मेरी कारीगरी मैं मोहम्मद अली विद द पेन. पाव खारी बड़ी फिर ताली पड़ी कहलाने लगी.